Hello guys, welcome to another video of Animals and Birds with Anirudh. एंड आज का वीडियो होगा बर्डिंग इन बीदर। आपको नहीं पता बीदर क्या है? तो वो एक सिटी है कर्नाटका में जो डेक्कन में है। मैं इतना फास्ट बात क्यों कर रहा हूँ मुझे एकदम नहीं पता, तो मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। सो Bidar. When you think about it, you don't know much about it. But when I think about Bidar, I am happy because Bidar में है बहुत सारे birds. So let me explain. This is birding in Bidar. This is a new series, and the first episode is birding in jungle lodges and resorts. This is going to be a half vlog. हम हैदराबाद से गए टू बीदर, 3 hour जर्नी फुल ऑफ फैक्ट्रीज, एंड मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। हम एक पिट स्टॉप लिए थे बीच में एक ब्रेक के लिए, लाइक ओनली फॉर 5 minutes, सो इट्स नॉट अ ब्रेक। एंड उधर हमें एक इंडियन रोलर दिखा, पाइट बुस्टेड एंड अ ट्री पिपेट। वाओ, न्यू बर्ड इन द मिडल ऑफ नोवेयर। दैट्स हाउ वी डू इट। Tree pip, no, yeah, seriously, tree pipit in the middle of nowhere. So when we reached Bidar, I don't. So let me just continue. When we reached Bidar, we crossed it because we don't actually want to go to Bidar. We want to go to Jungle Lodges and Resorts. And Jungle Lodges and Resorts, the Black Buck Resort in specific, is not in Bidar. It's on the outskirts of Bidar. So we went to the outskirts of Bidar, and the terrain there is the terrain is, how to describe the terrain? It's like बहुत सारे rocks हैं with holes in them, and sometimes you get goose pimples about thinking, but they're awesome. Those rocks are my best friends. Just kidding, no, they're not. And when I see those rocks somewhere, I think, francolins and birds. Actually, no, I only saw those rocks in Bidar. So when you reach the Jungle Lodges and Resort, there's a small slope which makes you feel, oh, what an adventure. And then you realize that it's just a resort and it's full of adventures. And when you come to the parking lot, there's a small tree. But what is Jungle Lodges? You might be thinking. Jungle Lodges is a company जो कर्नाटका में like spread out है with many resorts. These resorts have many interesting activities. But currently in COVID, you won't be able to go there because COVID. And I am very angry just because I can't go there. मैं बीदर गया था जब कोविड केस बहुत कम थे, and that was only this year. Yeah, it was just this year actually. Yeah. So I went to Bidar. This was not my first time in Bidar. This was actually I forgot. Because before when I went, I didn't like birding, which is weird. Because अब मेरे पास channel है. Okay, next. So when I reached there, there was a small tree in the center जहाँ पे एक ultramarine flycatcher दिखा. Oh wow, ultramarine flycatcher, but not male. It was a female, but still new bird for me. Next, then we ate some lunch because it was afternoon, I guess. Then उधर एक buffet था. It's called गोलघर. I don't know why वो गोल नहीं है, but फिर भी it's an open area जहाँ पे डिनर, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स एंड लंच मिलेगा. एंड देन बीदर में बहुत सारे हैमॉक्स है. आपको अगर आप नॉन बर्डर हो या बर्डर भी हो तो आप उधर रेस्ट कर सकते हो. बट इफ यू आर अ बर्डर, आई रिकमेंड बर्डिंग द होल रिजॉर्ट इन ऑल ऑफ योर फ्री टाइम, बिकॉज रिजॉर्ट के अंदर बहुत सारे बर्ड्स हैं. And after eating lunch, we took a break, and then after that I started birding again in the resort. I saw some small minivets, a sulfur-bellied warbler का मुझे पिक्चर नहीं मिला क्योंकि वो bushes में डांस कर रहा था, and bushes के थ्रू फोकस नहीं हो रहा था. And मिनीवेट का मुझे बहुत अच्छा शॉट आ गया. हियर्स ये स्क्रीन पे अभी मैं दिखा देता हूँ. देखिए, द स्मॉल मिनीवेट. एंड नेक्स्ट इज द ट्रेक. These resorts take you on small treks / bird watching tours, and there are 2 routes. One is near the tank and one is on the mountain. So
on the first day, actually not day, it was only the second half. So evening में हम लोग trek में गए and we saw some birds like plum-headed parakeets, long-tailed shrikes and bayback shrikes. So when we went up the mountain, I was like बहुत steep mountain था. I was very tired when I reached the top. Like you have a guide, so you don't need to be afraid of getting lost or something. And there's a big tree in the middle, like a big tree, big banyan tree. And उसमें birds ज़्यादा नहीं थे because उधर बहुत सारे लंगूर्स थे. मैं डर गया था. थोड़े babblers थे, jungle babblers and yellow-billed babblers. I remember seeing them. And there was a redstart, which was interesting. Black redstart मैं बहुत कम देखा हूँ actually. So I saw the black redstart far away था. I'll just put the picture just for reference, but I'll put a nice picture also जो मैंने नहीं लिया है for आपको देखने को कि कैसा दिखता है, because दूर से एकदम idea नहीं होगा आपको कैसा दिखता है. But I'll put both of them. So next we went front and थोड़ा एक incline, very small incline जैसा था. But that small incline had a difference in between a bad photograph and a good photograph. And so there was a long-tailed shrike sitting on a stick, but and the sun was perfectly, the sun's rays were perfectly falling on the shrike, and without any hesitation मैंने कैमरा को क्लिक किया. टिक 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 टिक, एक गन जैसा आवाज आ रहे थे. बैकग्राउंड पूरा म्यूजिक में वेट, नहीं ऐसा नहीं था, एकदम नहीं हुआ ऐसा. एंड नेक्स्ट लाइक अदर बर्डर्स नीचे से फोटो ले रहे थे, उनका उतना अच्छा नहीं आएगा बिकॉज वो लोग नीचे थे एंड मैं ऊपर था. मुझे परफेक्ट शॉट मिल गया, मैंने ले लिया. एंड ये ऑन द स्क्रीन, दिस इज द शॉट. कैन यू फील इट? डू यू फील द पावर इन द स्ट्राइक? Do you feel it? Okay, next. And after that हम एक छोटा break ले लिया because we were still very tired of climbing the mountain. And उस टाइम में मैंने एक ग्रे फ्रैंकोलिन देख लिया 1-2 सेकंड के लिए. Here's a photo. And 2 bayback shrikes जिसका मुझे अच्छा फोटो मिल गया. यहाँ shrikes बहुत सारे मिलते हैं क्योंकि ये डेक्कन है एंड श्राइक का परफेक्ट हैबिटेट है इधर. एंड बीदर में ज्यादा श्राइक्स मिलेंगे हैदराबाद से, मुझे नहीं पता क्यों. मुझे श्राइक्स पसंद है, हैदराबाद में उतना नहीं मिलता, बट फिर भी. नेक्स्ट यहाँ एक और आइकॉनिक हाँ एक और कॉमन बर्ड है जो ओनली इधर मिलता है बीदर में. द प्लम हेडेड पैराकीट. आई मीन हैदराबाद में मिल जाएगा बट it's hard to find them actually. हैदराबाद में रेयर है. अदर प्लेसेस मुझे नहीं पता, जितना मैं देखा हूँ नहीं मिलता है. बीदर में बहुत मिलता है. प्लम हेडेड पैराकीट का नाम ही ऐसा है. हेड में there's a reddish color for the male and female का grayish होता है. Female is very camouflaged. Male even though उसके पास red headed, it is very camouflaged into the surrounding because उसका half of the body green है. Here's a picture of both of them sitting together. This is actually on day 2, but फिर भी. And when we came back to the resort, it was evening and we saw some white eyes and oriole, Indian golden oriole. That's I didn't get good pictures, so I won't put them. So next we ate snacks and at the Golghar some pakoda. जल्दी खत्म हो गया क्योंकि इतना टेस्टी था. एंड वी वॉच द डॉक्यूमेंट्री जो मुझे एकदम पसंद नहीं आया क्योंकि वो एक एड था. समटाइम्स इट शोज एन एड एंड समटाइम्स इट शोज एक्चुअली अ गुड डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इट वाज लाइक not an ad but like a girl visiting all the resorts of jungle lodges. Okay, next. So it was like that and this video is too long. फिर भी let's continue. और क्या था हाँ, आफ्टर ईटिंग डिनर हम लोग गए नाइट जार सफारी के लिए. Yes,
नाइट जार सफारी, आपने ये कभी नहीं सुना होगा, आपको नहीं पता होगा नाइट जार क्या होता है. इट्स अ स्मॉल बर्ड जो डे टाइम में एकदम हिलता नहीं है. मास्टर्स ऑफ हाइड एंड सीक. आउल जैसा कुछ होता है बट इट डजंट लुक लाइक अ आउल. ग्राउंड पे बैठता है, पेड़ पे भी बैठता है, बट Indian nightjars sit on the ground. Different types of nightjars होते हैं. Jungle nightjars sit on the trees in the jungle, and Indian nightjars sit on the ground because those are. मैं only Indian nightjar and jungle nightjar देखा हूँ till now. My luck of nightjars is not good. Okay. So we saw an Indian nightjar in the night. उतना अच्छा फोटो नहीं आया क्योंकि I have no experience of night time photography. Yes, मैं कभी भी night time में फोटो नहीं लिया हूँ. And but after editing I managed to get an okay photo. So here's that. This is an Indian nightjar, not a jungle nightjar, because Indian nightjar ground पे बैठता है. And this is day 1. हम लोग डे 2 के बारे में कल बात करेंगे. करंजा रिजर्वायर एंड द बर्ड वॉक नियर द लेक. And goodbye guys. Bye. We will see you in the next birding in Bidar.